Dear students, today we are going to start lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. This lesson is about an adventure that a family experiences. On July 1976, the narrator set a sail from England. He wanted to go around the world voyage. During their voyage, on 2nd January, huge waves shook the deck and broke the ship, due to which they had survived for 15 hours, but it was quite difficult to reach Australia. On January 6th, after facing hardships, they reached offshore on an island where all the 28 inhabitants who were living there came to cheer them. इस स्टोरी में एक एडवेंचर के बारे में बताया जा रहा है कि एक फैमिली एक्सपीरियंस करती है 1976 में जुलाई में। नैरेटर अपने वॉयज की शुरुआत इंग्लैंड से करते हैं। उनकी फैमिली पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। उनके वॉयज के दौरान अचानक एक तूफ़ान आया और जिसमें शिप के आगे का हिस्सा टूट जाता है और टूटने की वजह से 15 घंटे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया पहुंचना बहुत मुश्किल था। 6 जनवरी को मुश्किलों का सामना करने के बाद वो पास ही के एक आइलैंड पर उतर गए, जहां वहां रहते हुए 28 लोगों ने उनका स्वागत किया और उस शिप में मौजूद सभी लोग बच गए थे। So students, after we read the whole chapter, the message which author wants to convey is that if we are in problem and we face it hardly with courage and determination, we can achieve everything. So students, thank you so much and have a nice day.